हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कर्नाटका के आदि योगी का लेज़र शो देखने। तो देखिए, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंट्री गेट है। यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपना व्हीकल लेकर आते हैं। आप अपनी स्कूटी या बस से भी आ सकते हैं। आप बस से आएंगे तो चिकबल्लापुर बस स्टॉप के बाद आपको दूसरी बस मिलेगी, आपको एंट्री गेट तक छोड़ देगी। वहाँ से आप ऑटो से जा सकते हैं, बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं। देखिए, हम लोग जैसे कि लेजर शो की वजह से शाम को पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अभी देखिए, इस तरह का रोड है यहाँ पर, बहुत अच्छा रोड नहीं है। हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हमने सबसे पहले शूज़ वगैरह निकाल दिए, ऐसा इंस्ट्रक्शंस थे वहाँ पर। और जैसा कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ये एंट्री गेट है, मतलब अंदर का एंट्री गेट है। लेज़र शो देखने से पहले अंदर बहुत बड़ा स्टैचू है शिव जी का, उससे पहले आपको गेट पर ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने फ़ोटो खींचने के लिए मना किया है, तो हम लोग फ़ोटो बंद करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सभी लोग लेज़र शो का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही लेज़र शो स्टार्ट होगा, ये सारी लाइटें ऑफ हो जाएंगी और सभी लोग बस उसका ही इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग भी उसका ही इंतज़ार करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लेज़र शो का मज़ा लेते हैं बहुत ही अच्छी म्यूज़िक के साथ। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away.
only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way."
Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Khanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadeva